AUM, 300 yeah, and he has partners along with him which are more than 260. So basically this the idea of doing this 1 hour interview is for one reason, is that this interviews get circulated to Deep Sir's investors, Deep Sir's partners, so that they get insight what is it that we are doing as a PGIM, as a fund house. So I have given Deep Sir, I have given a overall perspective that what is it that we'll be covering is that on the markets, investment processes of PGIM India Mutual Fund, what is it that we look at while building the portfolios, where we feel that investors should be in right at this point in time, and the equity overview, sir. So I'll hand it over to Deep Sir, you and Vinay Paharia, and I'll log off from here. Over to you both. नमस्ते एवरीवन। आज हमारे साथ वंस अगेन एक बहुत ही दो डिकेड्स का एक्सपीरियंस रखने वाले इक्विटी का और बाजार का मिस्टर विनय पहारिया जी है। विनय पहारिया जी पहले यूनियन में CIO हुआ करते थे और अभी विनय पहारिया जी PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड संभालते हैं एंड इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हम्बल और बहुत ही शालीन पर्सनालिटी है। मैं भी उनको काफी टाइम से जानता हूँ और आज इनके साथ हम लोग बाजार की बात करेंगे। सर वेलकम, वेलकम ऑन द शो सर। Thank you for having me on the show. Thank you sir. It's always a pleasure to be on the show. Thanks a lot sir. सर डायरेक्टली आ रहा हूं मैं पॉइंट पे। एक बहुत कॉमन और जेनरिक क्वेश्चन है, बस सर क्या लगता है, हर एक का क्वेश्चन रहता है। सो व्हाट इज योर आउटलुक? आपको क्या लगता है, मतलब इस लेवल पे बाजार जहां 21,700 21,800 के आसपास चल रहा है, PGIM और आपका क्या व्यू है सर? Okay, so PGIM का view is currently that the market is not a single homogeneous set. इस मार्केट में आपको दो टाइप के सेट नजर आएंगे। So first set is of set of companies which are attractively valued, which are high growth companies, which are good quality companies, and second is a set of companies which are low growth, low quality, and yet they are trading at extremely high bubble-like valuation. So I think clearly it is a two-tiered market. Achha. And one tier is clearly in a very strong bubble, and in the other tier you have a huge set of opportunities available for long-term investors. So हमारा view ऐसा है कि हम cautiously optimistic हैं, काफी optimistic हैं on the segment of the market which is reasonably valued, which is high growth and high quality, and we are very, very cautious. In fact, we are going to put it like a warning for people to remain out of segments of the market which are low quality, low growth, and very high valuation companies. So these are the set of companies which clearly should be avoided. They have delivered very strong returns in the last 9 months, and the long-term growth trajectory of such companies is not very strong. So I think clearly two-tiered market. Okay. तो ये वैसा है क्या सर, जैसे आपने बताया, मतलब हर टपरी पे जब हर बंदा फंड मैनेजर बन जाता है तो वहां से भागने का तैयारी करनी चाहिए या नहीं? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जनरली जब आप एक बबल मार्केट देखते हैं, बुल मार्केट देखते हैं, उसमें अक्रॉस द बोर्ड सारी सेगमेंट्स मार्केट की एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इस बार का जो मार्केट है वो टू टियर्ड है। अगर आपको याद होगा 1998 से लेकर 2000 में देयर वाज अ बूम इन द मार्केट, and this boom was concentrated in one segment of the market which was called like TMT or software, media, technology, etc. So the old economy was available at a very attractive valuation, and new economy was trading at a abnormal valuation. Wow. Now the situation is reversed. Achha. In this market you have good quality new economy sort of companies which are high quality, high growth, are available at reasonable price, whereas the old economy or the companies which are weaker companies, cyclical companies, they are all
available at abnormal valuation. So just to give you some examples, if you look at BSE PSU index, it has delivered almost a 80% return on a year-to-date basis. Right. Whereas the last 10-year returns, which are almost in line with their gross profit growth, is just about 8 or 9%. Right. So I would say there are many such micro bubbles in the market. Investors should be very, very careful. And in fact, we would say that you should stay away from many of these segments of the market. But at the same point of time, there are lots of good quality, high growth companies, right, which are available at reasonable price. A classic case, for example, is the banking sector. Achha. The private banks are available at attractive valuation. Okay. They are growing fast. They are having his long-term track record of very high quality metrics, and as I said, available at attractive valuation. Great. So I think two-tiered market once again. Sir, एक बहुत important चीज जैसे lot of valuations are absolutely stretchy and very expensive at a small cap and mid cap also. So what is your view on that? Because a lot of people are actually forcing to the MFDs, नहीं ये small cap में पैसा डालो. So what do you feel on that? What do you say on that? So आपको मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ कि जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स है, हम उसे अगर हम देखें और उसको अगर हम डिवाइड करें गुड क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में जो प्रपोर्शन ऑफ बैड क्वालिटी कंपनीज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 31%. And if you look at the returns of these companies in the last 9 months, it is almost more than 100%. My God. Whereas there are some good quality companies which are forming approximately 30-35% of the benchmark. All right. They have delivered much lower returns, approximately to roughly 20 to 25%. They are growing at a good pace and are still available at reasonable price. Right. So I would say that we will not paint the entire segment with the same brush. Mid and small caps definitely in general are trading at approximately 30 to 40% higher valuation than their current fair value. But this is largely driven by the weaker set of companies, the cyclical set of companies which do not deserve to trade at high prices but are currently trading at such prices. So once again, clearly a stock picker's opportunity. You should remain invested in small caps and mid caps for the long period of time. Right. But the type of small and mid caps which you remain invested in are very, very important at this point of time in the market. सुपर ग्रेट. तो वो जो 33-35% का जो ये है स्मॉल कैप की जो अपॉर्चुनिटी है, उसमें वो कौन से सेक्टर में है वो बता पाएंगे? मतलब कुछ स्पेसिफिकली या प्रेडोमिनेटली आपको जो अभी अट्रैक्शन जहां लग रहा है? So स्मॉल कैप और मिड कैप जो सेगमेंट होता है वो काफी बॉटम अप होता है सर. तो जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है. अच्छा. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज अ स्पेस व्हिच इज एक्सप्लोडिंग, लाइक luxury car dealerships. Right. Like there are lots of new opportunities which have cropped up, lots of good companies which have come to the public market in the last 3 years. So in general the IPO market is overvalued, but out of let's say 100 companies there will still be 4 or 5 or 7 companies which are very attractive. So I think across different segments of the market there are opportunities. We are building portfolios which are very diversified. Like capital goods में भी होंगी कुछ companies consumer discretionary segment में है, कुछ companies FMCG segment में, small cap में. In fact, even in the mid cap space, some companies are in the software IT technology space. So it is a very diverse basket of companies and industries, but each and every company is having some or the other niche. So bottom up story is very different. Right. Sir, एक segment जो अभी बहुत boom कर रहा है industry में, that's called the defense. Sorry, you are on mute, sir. I am not able to hear you. हाँ, मैं बहुत हाँ. तो एक segment जो बहुत talk of the town है everywhere is the defense. Everybody feel that यार defense में तो ये बनेगा, वो बनेगा, ये order book है, वो order book है. आपका view क्या है defense पे? If you can please. Sure. Defense is a long-term good theme. There
it is not an easy business to enter into. It requires a long gestation period, which means if you, let's say, start doing work on a project, then this project takes at least 3 to 4 years for you to get qualified. And then you get some orders which will run for the next 5 to 7 years. And then once again, you have to bid for business. So that is the nature of defense contracts. Large number of defense contracts are coming up. So it's a good opportunity. Having said that, there are many companies which are going to see a cyclical decline in their business, because defense is also cyclical business. Right. And generally, people would not find it easy to appreciate that. Currently, what we are seeing is markets are extrapolating a lot of last 2-3 years growth completely into the future. That may or may not be the case, and hence you should be very careful of investing in this segment. There is a lot of good opportunities for a businessman, but for an investor, this is a sector which is clearly in bubble. Excuse me. सर, एक आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बैंकिंग सेक्टर आपको बहुत अच्छा लगता है. मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कैन यू प्लीज थ्रो लिटिल मोर टाइम ऑन बैंकिंग सेक्टर की, व्हाट आर दोज रीजंस, और क्यों इवन थोड़ा सा एलोकेशन इन्वेस्टर्स ने अपना बैंकिंग सेक्टर में बढ़ाना चाहिए. बहुत आसान सी चीज है दीप जी की बैंकिंग सेक्टर रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल कंट्री. अगर आप देखें कोई भी कंट्री को, अगर आपके उसकी ग्रोथ स्टोरी को कैप्चर करना है तो वो बेस्ट कैप्चर्ड की जा सकती है उनकी बैंक्स के थ्रू. लेकिन बैंकिंग सेक्टर बहुत आसान नहीं है. अगर बैंकिंग का बिजनेस देखेंगे तो उसमें आप जब लोन देते हैं तो लोन रिटर्न भी आना चाहिए. लोन अंडरराइटिंग की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए. आपका एक अच्छा ब्रांच नेटवर्क होना चाहिए. आपका एक अच्छा ब्रांड नेम होना चाहिए. एंड ओवरऑल आपको एक अच्छा ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्रिएट करके रखनी चाहिए. अगर हम ये सारी चीज देखें सो भारत की जो लार्ज बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो ऑपरेट कर रही है, ये सारे जो एरियाज में काफी सक्षम हैं. दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर ऑपरेशंस, in terms of having a very wide and large branch network, being at the cutting edge of technology, and then after doing all of this, they're growing at a fast pace. So most of the banks are actually growing at more than 15% per annum. They have returns on equity in excess of 15% per annum. And on top of that, they are available at a reasonable price to book. So इसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म तक ये कंपनी अपनी ग्रोथ को अपनी सेल्फ फंडिंग कर सकती है, क्योंकि जितना आपका आरओई होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आपकी ग्रोथ उससे कम होगी या उसके इक्विवेलेंट होगी तो आपको एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं. सो विद द सेम लेवल ऑफ फंडिंग करेक्ट, बिल्कुल डाइल्यूशन नहीं करना है उन्हें सिर्फ अपनी करेंटली जो ग्रो कर रहे हैं उसी तरह ग्रो करते रहना है. तो आपको एज अ इन्वेस्टर at the end of 5 years, 10 years, you get a significantly larger book value, dividend, earnings per share for these companies, which will create tremendous value. So I think that is getting underappreciated in the market today. And this is one segment which is available at a very attractive valuation even today. Great. Sir, I would be now, मैं बहुत I would be more than happy now if you can just make us understand कि अभी आप पोजीशन कैसे कर रहे हैं पीजीएम के फंड्स को, मतलब इंक्लूडिंग फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप एंड इवन पीजीएम स्मॉल कैप आल्सो, हाउ यू आर पोजीशनिंग. सो फ्लेक्सी कैप में हम लार्जली हमारा एक्सपोजर है बैंकिंग सेक्टर्स में, हमारा एक्सपोजर है हेल्थ केयर सर्विसेज सेक्टर में. सो हेल्थ केयर में हमारा बड़ा एक्सपोजर हॉस्पिटल्स के अंदर है. अच्छा. सो वी ओन a diversified basket of hospitals. Many of them have listed in the last few years. We have a big exposure to consumer discretionary, money auto ancillaries, some of the automobile companies, some of the consumer restaurant companies, for example. There are very diversified baskets of companies in the consumer discretionary segment. So that is one prominent segment where we are big exposure in. We are
having a lower than average exposure in almost all commodity sectors. We don't invest much in commodities. We have, because once again, it's very commodity like sector, and we have slightly lower than average exposure in software sector. But that is an area where we have recently increased our exposure. So in the past, our underweight in software was significantly high. In the last few months or quarters, we have increased. So this is how we are positioned in the flexi cap fund. Broadly, in terms of capitalization, we are overweight large caps and we are underweight small and mid caps for the reasons which we have just discussed. Large caps are more attractive in terms of growth and value perspective versus small and mid caps. Great. सर एक जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया कि आप बैंक पे बहुत बुलिश है. Any other 2-3 segments जहाँ पे you are absolutely bullish and few reasons also, so शायद investors will going to get a little more raised about those. Yeah, so generally we are very positive on consumption as a sector. अच्छा. So consumption में काफी variations होते हैं. जैसे for example कंज्यूमर स्टेपल्स होता है, एफएमसीजी टाइप, जो रेगुलर डे टू डे की चीजें हम खरीदते हैं उसको स्टेपल्स कहा जाता है. तो वहां पे हमारा बड़ा एक्सपोजर नहीं है. अच्छा. हमारा एक्सपोजर है कंज्यूमर रिटेल सेक्टर में, जो कि काफी ग्रो कर रहा है, ऑर्गेनाइज रिटेल ग्रो कर रहा है. तो वहां पे हमारा एक्सपोजर है. कंज्यूमर में हम हॉस्पिटल्स को एक कंज्यूमर सेगमेंट मानेंगे. अच्छा. क्योंकि अल्टीमेटली इट्स डायरेक्टली पेड बाय द कंज्यूमर. तो उसकी क्लासिफिकेशन हम हेल्थ केयर बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कंज्यूमर कंजम्पशन में ही है. और वो एक सेक्टर है जहाँ पे इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है काफी अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर में काफी वीक हेल्थ केयर सर्विसेज रही है, जो अभी चेंज हो रहा है. तो हेल्थ केयर में हमारा बड़ा ओवरवेट है. वहां पे हम काफी इंक्रीमेंटली देख रहे हैं पोटेंशियल. The third segment is broadly consumer discretionary, which includes automobiles, auto ancillaries. So there are many auto ancillaries, for example, which are actually capturing new opportunities in the electric vehicle segment. They are harnessing India's low cost of manufacturing to export their products significantly. There are companies in the electronic manufacturing space, once again, which come in the consumer discretionary segment. So all of these are new age type of segments. They are capturing the benefits out of production linked incentives. So a whole host of new age areas which are opening up. There are few internet companies which we are positive on. So I think these are the nature of companies which we are positive on, but the common thread running across all of them is that they are benefiting out of increase in India's GDP growth, which is showing up in the form of increased income of all of the Indian citizens. Right. एक और सवाल अगेन, लाइक फ्लोज, इंटरनेशनल फ्लोज के बारे में आप क्या सोचते हो सर? मतलब आपको डैम्पन दिखता है, फिर फ्लोज नियर फ्यूचर बहुत तगड़े आते हुए नजर आते हैं? देखिए, मेरा तो एक ही मानना है, मनी फ्लो इज लाइक वाटर. जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे पैसा आएगा. अच्छा. तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते. हम एक ही चीज प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है. और हमने क्लियरली देखा है इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत है. और इनफैक्ट इन पिछले लास्ट 1 से 2 साल में ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबली सारी इकोनॉमीज स्लो डाउन हो रही है, वीकनेस आ रही है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी एक दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, इंप्रूव हो रही है और ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है. सो इट इज अ वेरी बिग फीट एंड आई एम श्योर everyone will sit back and take notice of this, and hence we are very optimistic on the overall economy. Super. Sir, जाते जाते again, since 20 years of experience is a big time, so what is your word of wisdom on the market? Sure. आपके चैनल से मैं यही बोलना चाहूंगा लोगों को कि एक जो लास्ट 4 साल में मैंने नोटिस किया है, एक जनरली स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग टूल ना यूज के जैसे टूल ना यूज किया जाए.
यहाँ पे स्पेकुलेट मत करिए, आके इसको एक गैम्बलिंग डेन के जैसे मत यूज करिए। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक मार्केट कैन फ्लक्चुएट। Remember, you can make losses in stock market. So do not put in more money than you can afford to lose. Remember that there can be downs just like ups. We have seen only one-way market in the last 4 years, 3 years now. And in these 3 years, we have seen, I think, the number of demat accounts going from, I think, 3 crores to 14 crores. Seriously. So all of these 11 crore new investors have actually not seen losses. And that is my worry. I think channels like yours should educate investors that there can be fluctuations. This is a great market for building long-term wealth, but do not come into it to make short-term gains. Do not come in here for gambling. This is purely a place for long-term investment. So great. सर थैंक यू वेरी मच। इट वाज इंडीड अमेजिंग इंसाइट जो आपने हमको दिया है, एंड आई एम वेरी श्योर कि प्रेजेंट मार्केट में बहुत सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी आपके जैसे इतने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर पर्सनालिटीज के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है वो समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने में। थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन मिलियंस ऑफ थैंक्स सर कि आपने आपका टाइम हमको आपने दिया, एंड मिलियंस ऑफ थैंक्स फॉर थैंक यू। Thank you very much. It's my pleasure to be on your show. Thank you, Deepji. Thank you.